2022 से लेकर 2024 तक तो आप सो रहे थे, और जब हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो आप लोगों ने फर्जीपना काम करना शुरू कर दिया, और एसपी उसको एंडोर्स कर रहा है। दिस इज व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट टू द हाई कोर्ट? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में इस तरीके की बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, मुरैना से जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके ऑफिसर्स इस तरीके से बिहेव करेंगे तो टेल देम दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी। ना हमें शौक चढ़ा हुआ है कि एसपी की शक्ल देखनी है। I don't want any apology, sir. I am not your employer. I am saying again and again. I am saying again and again that I am not your employer. What is your explanation? How it can be that the upper part of the Panchanama and the signatures are in the same ink, whereas the details of the act done by the authority is in a different ink? Sir, actually, I've spoken to the IO about it, sir. And, sir, I would say, sir, prima facie, it seems that there are two different colors here. And तो ऐसा कीजिए, हम इसको साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। अगर आप अभी भी कह रहे हैं प्राइमा फेसी, तो यस, बिफोर अराइविंग एट अ कंक्लूजन वी मस्ट हैव अ साइंटिफिक रिपोर्ट. तो शुड आई सेंड इट टू द साइंटिफिक एफएसएल? सर, माय सबमिशन. नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में इस तरीके की बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, मुरैना से जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके ऑफिसर्स इस तरीके से बिहेव करेंगे तो टेल देम दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी. How can he manipulate this document? And still you are saying that prima facie. Fine, yes, I don't want your conclusion because you, I cannot bind you to that since you have admitted, therefore he is guilty. Prima facie, you are correct that yes, there appears to be something which requires further inquiry. I am sending it to the FSL to find it out whether this document is in the same ink or it has been written with different pens. उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं सर, आपको तो अभी कल बताया नहीं है, इसलिए आपको भी नहीं मालूम। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका वो आईओ उस दिन कटनी में और कौन कौन से ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करने गया था? सर, आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू इट, सर. व्हाटएवर टाइम आई हैड, सर. ना फाइन, नो डिफिकल्टीज. आई जस्ट वांटेड, देखिए सर, एक्चुअली क्या है, आई हैव नॉट कॉल्ड यू टू पॉइंट आउट एनी मिस्टेक committed by you. Sir. I have called you to point out the mistakes which are being done by your subordinates, under hope and belief that their SP will save them. Yes. Right? तो मैं आपके सबऑर्डिनेट्स की हरकतों को डायरेक्टली 1-to-1 बताना चाहता हूं. That's why you were requested to come down. राइट? दूसरी बात, जो असली ग्रीवेंस है मेरे को, टू होम द डायरेक्शन वाज गिवन? सर, डायरेक्शन वाज गिवन टू यू. डिड यू एवर गो थ्रू द केस डायरी बिफोर सेंडिंग इट टू द हाई कोर्ट? Sir, it was a standing warrant file. Sir, I've been monitoring the case. Did you ever go through the case diary before sending it to the court? Sir, you took it very easily. Sir, taken for granted answer. हमें तो कुछ करना नहीं है, आईओ ने, सब इंस्पेक्टर ने भेज दो. So if you are dependent on your sub inspector, then be ready to face the consequences of the misdeeds of your sub inspector. I didn't ask the SHO to execute the warrant with a hope and belief that the SP will personally look into the matter. And SP means a person having some responsibility on his shoulders. If the SP are just throwing away the files to their subordinates, okay, जो तुम करोगे हम भी तुम्हारे साथ टंग जाएंगे फांसी पे. Fine, be ready for that. Why you were directed on it? ना हमें शौक चढ़ा हुआ है कि एसपी की शक्ल देखनी है. कभी आपने सोचा कि आपको पर्सनल अपीयरेंस का तो ऑर्डर डे 1 पे किया नहीं था, आप ही को डायरेक्शन दिया था, आपने समय मांगा, हमने समय भी दे दिया था. उसके बाद डायरी आई और सारा फर्जीवाड़ा दिख रहा है उसमें, और आपने डायरी भेजने से पहले यू डिडंट टेक द पेन्स ऑफ इवन गोइंग थ्रू द केस डायरी. So this is the concern which you are showing towards the orders passed by the High Court.
You may be busy in pleasing somebody else. You can understand what I want to say. Discharging duties and pleasing somebody, these are two different aspects. Please mind that words. So you may not be getting sufficient time to look into the diary which has been opened under the orders of the High Court. And once you delegated the authority which was given to you to your subordinate, then be ready to face the consequences of that also. तो मैं अभी सबसे पहले इसको FSL भेज देता हूं to verify that whether it is in the same ink or it is in a different. और उसके रिपरकशंस आपके ऊपर डायरेक्टली आएंगे because the direction was to you and it was for you to monitor everything, monitor and supervise everything, which you did not do anything. अब आप ये बता दीजिए how it is possible that few upper lines and the signatures which are at the bottom of the document are in the same ink and the body of the document is in the different. Is it possible? We can understand that while writing a document the ink was over and therefore you started using the different. Then the signature should also have been in the same ink in which the body of the order has been, this document has been mentioned. ये पहले खाली छोड़ के उसमें ये लिपापोती की गई है. And you encourage that by not taking care of everything. What have you to say, sir? Sir, first of all, sir, I offer unconditional apologies. I don't want any apology, sir. I am not your employer. I am saying again and again. We have, sir. I am saying again and again that I am not your employer. Your department may promote you, your department may demote you, your department may terminate you. It is none of my business. I am concerned about the fact that one person is absconding who was a hardcore criminal, even according to you. Yes, Right? sir. So what is your opinion about the background of that person? Sir, he's a hardened criminal, sir. Hardened criminal. How many offences under section 302 were registered against him? Sir, on record, I think there are around 15 cases, sir. 15 cases. And how many 302 out of those 15? Sir, I don't have the exact details, sir. As of now. But even according to your information, he was a hardcore Yes. criminal, right? He's a hardened criminal. And in this case also, he absconded during the pendency of the trial, and the trial is for 302. You people were sitting idle because ट्रायल कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया तो क्या फर्क पड़ता. वही आपके डीजीपी मुरैना के केस में एफिडेविट्स पे एफिडेविट्स दे रहे थे कि माय पुलिस डिपार्टमेंट इज वेरी एफिशिएंट. You must be aware of everything. What transpired at Morena? Are you aware of the affidavits which were given by your DGP? Sir. You are aware. You must be aware that all those affidavits were supported by the circulars issued by the PHQ from time to time. Right? Sir. But you sat over the warrant issued by the trial court. भूप जी को कब वारंट इशू हुआ था ट्रायल कोर्ट का? भूप सिंह जी, Your Lordship, year in the 1992, Your Lordship. 92 से वारंट इशू है. और 2020 में कोरोना लगने के बाद वो he was अरे appear वो पुराना छोड़ my दीजिए. lord, my एंटिसिपेटरी हो जाने के बाद ये दोबारा वारंट कब इशू हुआ? दोबारा वारंट 2022